Now question number 7. In question number 7, students, they are asking you how many transition state and intermediate will be formed during the course of reaction, where they have given you a reactant and H2O in presence of H+. So this is hydration, addition of water to alkene, isn't it? So let's check it out और इसके पूरे मैकेनिज्म से देख के समझने का ट्राई करते हैं कि हाउ मेनी इंटरमीडिएट एंड हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म. So students, what we have over here is, this is the reactant that is provided, isn't it? And when we react it with H2O and H+, तो सबसे पहले H+ will go and attack on this double bond. When it will attack on this double bond, a transition, सबसे पहले student in this case, सबसे पहले जब ये अटैक करता रहेगा, so definitely हाइड्रोजन का अटैक जो होगा, हाइड्रोजन का अटैक होगा. So this is the double bond and this is the hydrogen. So hydrogen will be attacking और ये double bond टूटता जाएगा and positive charge will generate. तो पहले स्टेप में what you will get. अब देखो स्टूडेंट, एक बात समझिए, जब कभी कोई भी स्टेप होता है, सो एवरी स्टेप इंक्लूड अ ट्रांजिशन स्टेट. इस केस में हाइड्रोजन का और कार्बन का बॉन्ड बनना और कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूटना will be a transition state, and this transition state leads to generation to what? This leads to generation to a carbocation. So this is step 1. And on step 2, this ring will expand. This is step 2. That is ring expansion. So first step is what? Attack of H+. Second step is ring expansion leading to a formation of a 5-member ring. So students, जब ये bond टूटेगा, so if suppose this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 and this is 6. So 2 and 6 will get a bond between them. 2, 6, 5, 4 and 3, and 3 will be having a methyl group. And जब ये bond टूटेगा students, so this will get minus and this will get plus. Minus and plus will form bond, लेकिन 3 पे एक पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होगा. एंड इवन ऑन सेकंड देयर इज अ मिथिल ग्रुप विच इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन एटम. इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? सो दिस इज स्टेप 2. सो हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट? ऑलरेडी वी गॉट 2 स्टेप एंड 2 ट्रांजिशन स्टेट. नाउ अभी इसका और कोई पॉसिबिलिटी है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? सो नो, it's not possible now, isn't it? It's not possible now. So at this place student, what will happen? Now positive charge is there, अब इसका rearrangement नहीं हो सकता है. So at this place H2O will come and attack. When H2O will come and attack, so this is my step 3. This is my step 3 where water molecule will come and attack. अब जैसे water molecule will come and attack, ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा, isn't it? So this is step 3. Now at step 4, hydrogen will move out in the form of H+, producing the alcohol or the product that is desired. So these are the 4 steps that is involved. This step is called as deprotonation. So अगर student पूछा जाए how many transition state and how many intermediates are there, now it will be very simple for us to answer because we know number of steps and we know number of steps is there. So number of steps is equal to transition state and number of intermediate is number of steps minus 1. So over here answer is B. 4 steps means 4 transition state, but intermediate will be 3 because 4th step के बाद जो मिल रहा है वो इंटरमीडिएट ना होके प्रोडक्ट बनता है. इज इट क्लियर? उससे पहले जो भी मिल रहे थे, हर स्टेप में जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा था, फाइनल एंटिटी जो मिल रहा था रिएक्शन होने के बाद, दैट वाज इंटरमीडिएट. बट वो लास्ट स्टेप में व्हाट एवर यू गेट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट.